focus. Well, what the Delhiites have been breathing since the start of this season is toxic and poisonous air, and the situation only goes on worsening. The pollution levels in Delhi NCR have been recorded around 7 to 8 times above the government prescribed safe limit as a toxic haze continues to persist over the region. The Level 4 of the Graded Response Action Plan has been implemented in Delhi in the light of the hazardous air quality. Well, Environment Minister Gopal Rai announced the implementation of the odd-even scheme that will be enforced in Delhi from November 13 to 20 as a measure to combat the air pollution. Now, in order to safeguard the health of the school children, the Delhi government has decided to suspend the in-person classes in all schools except for students in grades 10 and 12 preparing for their board exams. On the other hand, schools in Gurugram and Faridabad have been shut for classes from nursery to 5. Meanwhile, the ban on BS3 petrol vehicles and BS4 diesel vehicles continues in the GRAP 4. And Gurugram police was seen restricting the entry of trucks into Delhi last night. बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ घूम के आती हैं और क्या है अपना जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनकी तो एंट्री है ना, BS6 का ग्रीन टोल भी देते हैं, फिर भी कोई प्रदूषण थोड़ी होता है BS6 में, फिर भी परेशानी है, हाईवे जाम कर देते पुलिस वाले, ड्राइवर रात को परेशान है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज़ से परेशानी हम भुगत रहे हैं। हम पूरी रात लग जाती है, न सो सकते न चल सकते, ये काफ़ी परेशानी है गाड़ियों को, इधर से घूमो के आओ उधर से जाओ। गाड़ियों की एंट्री ना होने से बहुत दिक्कत आती है। देख रहे हैं आप, हमारी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियां बाहर से होके जाती हैं तो हमें बहुत दूना पड़ता है, उसमें मालिक का भी खर्चा है, CNG हमारी एक्स्ट्रा भुगती है और बहुत सी दिक्कतें होती हैं। यहाँ की जो अभी पॉल्यूशन की जो स्तर देखा जाए तो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर जा रही है। हर दिन इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। अभी बहुत लार्ज संख्या में लोगों को प्रभावित भी कर रही है ये, खासकर जिनके उम्र 50 के प्लस हो गए हैं उनके ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनके थोड़ा लंग्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं ये बढ़ती उम्र के साथ, तो उन्हें इस चीज़ का फेस करना काफ़ी मुश्किल है। स्मोक से आम पब्लिक सभी को प्रॉब्लम हो रही है, खासकर सुबह मॉर्निंग वॉक या रनिंग करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आदमी की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और ये आपको पूरे सिस्टम जो शरीर का है उसको भी खराब कर रहा है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं, पहले गवर्नमेंट कहती है क्लास 5 तक स्कूल बंद होंगे, फिर 9th and 11th तक बंद होंगे, तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। इनफैक्ट सभी का बुरा हाल है। पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि ये पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, अब पंजाब वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ से नहीं आ रहा है। इट्स ऑल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड। Fog around here, it has been getting worse day by day, and it's not just a story of 1 year. It gets started every year at the end of the October, so it is causing problem for kids, for our veterans, for public. All right, to get us more details from the ground, my colleague Ishika is joining us with more on this. Ishika, what is the situation now? We spoke half an hour ago. We saw the situation not very good, but it looks like somewhere in NCR region, the pollution levels have slightly come down. But if talking about Delhi, it looks like the people will continue to breathe in the toxic and poisonous air. Well, Priyanka, as you rightly mentioned, today there is a slight improvement from yesterday. The air quality index recorded in the national capital is at 395. That means in the very poor category. But what is concerning here is that the experts say that it has just come back here, but it will oscillate back to the severe category. That means the things are not going to get better for the residents here. I've been joined with few of them. I'll go across to them. So you have come from London. Yes. And you are right now here. Can you tell the difference? Right now I'm seeing that you're also wearing a mask. Yeah, well, good morning to everyone. As soon as I landed on the flight, we could see the smog and we knew there was pollution in, and we did a bit of research about, what is going on, and it's, I was told a lot of it comes from farming and all this kind of... But are you facing any difficulty because of it? Itching? Yeah, but no, well, I drive a motorcycle here,
and it gets very, it's hard to see, hazy, yeah, and it's obviously it's not good for our health, and so there should be a change on that, I mean, on the I think it's the AIQ level is the max is 500, and we're at 488. So where's it going to go? Is it going to go above? And what happens when it gets above? For the children, because it's all about the children, how they're going to evolve in the future. Certainly, it's a very worrisome situation. Now, remember, Riyanka, that the government continues to emphasize the fact that the major source of pollution behind this is the vehicular pollution, and because of that, a step has been taken to bring back the odd-even rule. Now, I'll go across to you, sir. आज यहाँ पर odd-even rule जो है वो लागू होने वाला है वापस से 13 से 20 नवंबर तक. ये पिछली बार भी लागू हुआ था. क्या लगता है, सर, कि इस बार इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल कुछ भी इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा. अभी भी आप देख रहे हो कि दिल्ली में जो टर्क्स वगैरह बंद हैं, आज के आपके नवभारत टाइम्स में पढ़िएगा, किसी भी बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है. फॉर्मेलिटी के लिए वो चेकिंग कर रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं. ऑड इवन में भी यहाँ लोग ऐसे हैं, वो मेरे पे एक कार है, मैं उसमें क्या करूँगा? मेरा बेटा भी ऑफिस जाता, मुझे भी जाना है, उसमें और परेशानी है. तो ये कुछ लग नहीं रहा कि ये सरकार कुछ ऐसा कारगर कोई वो उठा रही है इसमें. मतलब डिफिकल्टी सिटीजन्स की इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बड़ा सवाल है. सर, ये इम्प्लीमेंटेशन के अलावा आप, क्योंकि एक सिटीजन है, हर साल आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, हर साल गवर्नमेंट प्लान लेके आती है, क्या लगता है सर कहाँ पे चूक हो जाती है, और आप क्या सजेशन देंगे? मैडम, जैसे कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा क्या करेगा? एक व्हीकल है, उस पर और लगा लो या इन लगा लो, वो कैसे परेशान होगा? बसों में बच्चों को भी जॉब पे जाना होता है, फैमिली मेंबर में भी कोई एनी प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे जाएगा? इससे कोई फायदा तो होगा ना, सोल्यूशन तो कोई निकलेगा नहीं इससे. ऑड इवन से एक हफ्ते के लिए क्या सोल्यूशन निकलेगा? Okay. All right, Ishika, many thanks for joining us with all the voices there and also the details that you are getting us in terms of the situation on the ground.